Congratulations, ट्रेलर बहुत ही ग्रिपिंग है. एंड माय क्वेश्चन इज फॉर नीरज. ये जो कस्टम्स की दुनिया हम देख रहे हैं, ये जो तस्करी आप ऑन स्क्रीन लाए हैं, इसके पीछे क्या कुछ रहा है, कितना चैलेंजिंग रहा है, कितना फन रहा है, व्हाट वाज दैट ऑल लाइक? नहीं, challenge is always welcome in our line of work, number one. क्योंकि अगर चैलेंज नहीं है then things will get boring right from the beginning. तो हम आपके सामने क्या रोमांचक कुछ ला पाएंगे. तो सबसे पहली बात तो यही थी कि the world was very interesting, the world was very exciting. It was an unseen world. And that was a huge magnet for us as storytellers to bring it to the audiences. आमतौर पे जो challenges आते हैं, that was what was coming during production and all that, but nothing that we didn't enjoy negotiating because it was a tight team, all focused on delivering the best story that could be told. And yeah, it was a fun ride for all of us at the end of the day, and I think I can speak for all of them. Thank you for your question. Sorry? जी. एक सेकंड मैम, माइक आ रहा है आपके. मैं भावना शर्मा, नव भारत. आप ये जो आपने कहा कि चैलेंजिंग था, लेकिन अगर हम आपकी अवेयरनेस डे से अब तक की आपकी जर्नी देखें तो आपने रियल इंसिडेंट्स पर जो बेस्ड स्टोरीज हैं उनको हमारे सामने आप लेकर आए हैं. तो उस लेवल पर कितना डिफिकल्ट था रियल और रील को मर्ज करना, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी जुड़े हुए हैं और जो बहुत बड़े बड़े केस सामने आए हैं उन सबको इसमें इंडक्ट करना, स्टोरी के लेवल पे और डायरेक्शन के लेवल पे. आपने वेडनेसडे की बात की तो वो 100 मिनट की फिल्म थी. ये 7 एपिसोड और तकरीबन मेरे ख्याल से या तानिया नोज इट, हाँ 4 घंटे 4 घंटे की कहानी है. तो जाहिर सी बात है सब कुछ जो है वो एम्पलीफाई हो जाता है. आपको एक नॉवल की तरह जो है वो पूरी की पूरी कहानी कहनी पड़ती है. तो to keep it engaging for all the 4 hours of content making, that was the challenge. But I think that more than that, it's a very interesting format of storytelling and a very different format from films. तो इसका जो to meet its demand, to meet its requirements, that's something that you enjoy and you relish as a storyteller. It's very different from films and उसका मजा उसमें. Thank you. Imran, on your left, on a lighter, if you were allowed to smuggle something, what is that one thing you would smuggle? You're getting me into trouble now, huh? It's okay. Or I've It's smuggled allowed. a lot of things. Like what? Give one, na? I think Neeraj knows the answer to that. No, so even we want to know now. He knows the answer. It's between both of us. I think he would have smuggled the same thing. Okay. I will never let you know what that is. Because I'm actually traveling now. Oh, that's हाँ, why. अगर किसी ने देख लिया ना, सीधा रोक देंगे एयरपोर्ट पे. been stopped at the Green International Channel flight ever? ले रहा हूँ मैं भी. हाँ? Have you been stopped at the Green Channel? Not for a picture, but. I think they've been very sweet with me. Whenever I've traveled back, custom officers have been very sweet. लेकिन वो एक होता है जब आप, you know, is that typical thing. There's no logic to it. जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, आप शायद गाड़ी अच्छी तरह चला रहे हैं लेकिन RTO ऑफिसर जब दिख जाता है तो पता नहीं वो खौफ कभी जाता नहीं है. वो शुरुआत में वैसी चीज़ होती है. And when I started traveling alone, I might have packed only clothes in my bag. लेकिन आपको हमेशा लगता है कि I'm carrying 100 kilos of contraband in my bag. जब आप immigration से जा रहे हैं या आप कस्टम से ग्रीन चैनल से निकल रहे हैं, तो वो खौफ कुछ सालों तक था, which is dumbfounded. It's not really anything logical. I have got called out at immigration checks very early on. Maybe something about the earrings when I used to travel alone. Abhi they see me with my sweet family, so they kind of don't suspect me. Again, early on in early 2000s, I used to get whisked away on the side quite a bit. I fit the bill of something or someone. I don't know who that is. I don't know who that person is, but yeah. I was asking the question when he said on a lighter note. Did he mean on a lighter note? So Never know. Quite a fiery question. Next up, if anybody please raise your hand if you have the mic. Hi Tanya, congratulations on 10 years. So my question is for Sharad. Action scenes ke time, did you discover something unusual happened to you while during the action scenes that you shot?
I hardly have action scenes here, first of all. And though I'm not trained in action scenes, but मुझे लगती नहीं है, किसी और को लगती हो तो पता नहीं. But nothing happened. There's no action sequence as such for me. What was the most unexpected thing in this show for you? There was a scene, I think, there was a very interesting scene. The light was going and then the angry young man, wakes up in Neeraj sir, jaldi karo, light ja raha hai, mujhe cover karna hai scene. So that particular scene was very, very difficult between me and Anurag. And हम दोनों की हालत खराब थी कि लाइट ना चली जाए कहीं, अंधेरा ना हो जाए, बहुत मार पड़ने वाली है उसके बाद. So I think that was a scary scene for us, I think, apart from anything else. लाइट नहीं जानी चाहिए, सीन खत्म कर दो उससे पहले. Hello sir, good evening. My name is Vipul Mishra from Uttar Pradesh. I'm a content creator. Hi, nice to meet you. जैसा कि ट्रेलर था, हम लोगों को बहुत मजा आया. लेकिन अब जैसे 4 घंटे हम लोग देखेंगे तो क्या इसमें कुछ मतलब बेहतरीन गाने भी हैं जैसा कि हम मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या है? Did I hear that right? गाने. सर एक्चुअली वो हाँ हंसी बन गए वो जाता नहीं है सर दिमाग में से. एक्चुअली जब पहली बार जब मैं नरेशन जब सुना था तो मैंने नीरज जी से कहा भी था कि इसमें प्लीज हर एपिसोड में एक गाना डाल दीजिए. सर ट्यून डाल दोगे तो भी चलेगा सर. डाल उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे गेट आउट बोल दिया ऑफिस से. एंड आई थॉट आई वुड लूज द शो. तो मैंने बोला ठीक है, गानों के बिना काम चला लेंगे. बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा अच्छा है इसमें, उससे काम चल जाएगा. 100% सर आप हैं इसका मतलब सुपर. तो फिर आप बहुत खुश रहेंगे इस शो में. बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर है. एक सर छोटा सा और सवाल है, क्या इसमें मतलब जैसे थ्रिलर तो है ये, हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा एक्साइटिंग लग रहा है सब कुछ, क्या थोड़ा बहुत मतलब लव स्टोरी देखने को मिलेगी? क्योंकि कास्ट इतनी खूबसूरत, जैसे मतलब कास्ट के साथ जस्टिस में बस 2 खूबसूरत लड़कियां हैं यहाँ पे. बिल्कुल बिल्कुल. कैसा सवाल पूछ रहे हैं? ऑफ कोर्स लव स्टोरी होगी. क्या बात है, क्या बात है सर. ह्यूज अप्लॉज. मैं हूँ और लव स्टोरी नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता. भाई साहब अच्छा हो तेरे नहीं बुलाया सीधे. Hi, right here. This is Kunal here from India Forums. I'll start with Raghav. Firstly, I think Raghav, your working marriage with Neeraj is probably one of the most lasting ones. You've obviously been on as an associate director with him on multiple films. Now you take over or being a director yourself, and of course Neeraj is there to guide you and do everything. How does this relationship evolve from you being there with him and knowing him and learning from him, and now taking onus on yourself as well? I think it's been to look back, it's been one of the most beautiful relations that has evolved. And so when I came to Mumbai, I've only worked with Neeraj sir, and I've been with Neeraj sir and Sheetal sir, my producer. So I've just been guided by them throughout. And पिटाई भी बहुत होती है, डांट भी बहुत पड़ती है, सिखाया भी बहुत जाता है. But the best part was that a lot of creative freedom was given. Of course, discipline becomes very, very important, which allows us to, handle challenging situations and get everything done. But creative freedom was something that he allowed the most for me also and for the team also. And that is the reason I think Taskari, when you'll see the show, so there's a lot of places, we just go all out. And the creative freedom is what I would say that's been one of the most beautiful relations with Neeraj sir at all times. Yeah. Fantastic. And just you continuing, I'll ask you something, Tanya. Firstly, everybody's congratulated you enough, but I'll be the latest one. Congratulations on 10 years. Thank you. Fantastic, continued great stories. We keep talking about rooted storytelling, being global in itself. You don't really need to have that conventional global appeal as people usually talk about. This is still, more into the conventional global appeal because everybody knows customs, everybody knows airports, so to speak, per se, right? What is it about a thriller that goes beyond these knowings? And of course, Neeraj Pandey has a signature flavor coming, and then that itself having that appeal to global audiences as well, while still being very Indianized, so to speak. It's a very intense and a very long question. We should schedule a meeting, but I'll hazard an answer. Great markers that you suggested, but at the heart of everything is really what the story is. I think it is really the resonance of the story and what you really buy into in the first few minutes that really hook you and keep you going,
through the episode until the cliffhanger, which leaves you breathless, and then you have to roll over and watch the next episode. But of course, I think fandoms of great creators like Neeraj goes a long way. The cast, Imran, Sharad, the whole cast, I think their respective fandoms are also things, I mean, you can see the energy in the room. They also appeal to, I would say, cross borders, to diaspora perhaps. And the minute enough people in a certain territory are watching a title, it starts, you know, the famed Netflix algorithm starts sort of really spreading the cheers, as I may, in this festive season. And hopefully, you know, it just grows and grows. And we've seen that love pretty much with every single title that we've launched. Every single title of ours is, you know, more or less appearing in the global list. So yes, the airports, this genre, there are these markers, but I think at the heart of it is a story well told. Nothing can compete with that. Zoya, hi. Seema from AFP. Zoya, did you think? Hold on. What? Yes. Zoya, did you think कि इमरान हाशमी जैसे कस्टम ऑफिसर को एक किस से कंट्रोल किया जा सकता है? What? Unbelievable. ये लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग तो मैं सोच भी नहीं सकती थी एक्चुअली. ये होगी. हाँ? I don't know what to answer to that. When I'm sitting over here on the dais, you'll be prepared for the worst. मैंने सोचा था ऐसा, पर मौका नहीं मिला मुझे. I think just being in the same frame with Imran he has enough charm. वैसे एक चीज़ है, I would like to say, every time जब भी मैंने किसी को कहा कि मैं ये शो करने जा रही हूँ, तस्करी शो है, and I'm with Imran Hashmi in this show, so सबने मुझे एक ऐसा एक look दिया है. So तो मैं ये clear करना चाहती हूँ. ये एक नीरज पांडे शो है, and there will be a lot of surprises for you, but ये surprise शायद आप मिस करेंगे. Family friendly show hai. Hi, this is Seema from AFP. I would like to ask Neeraj and Imran. Imran, what kind of prep went into it? Because custom officers are supposed to be very, like, you know, very alert, analytical thinking, and all like on the move. And also for Neeraj is like you have worked with many different actors. So was Imran the first choice for you? You want to take this first? No. I think generally I've traveled a lot. Even before this, whenever I have कोई वो आपके subconscious में बात रह जाती है. You have seen custom officers at the airport, वो चीज़ होती है. लेकिन consciously show sign करने के बाद I spoke to a lot of people. और सबसे जो बेहतरीन चीज़ इनके स्क्रिप्ट के बारे में, everything is there, it's very well researched. तो एक अच्छी टीम थी, नीरज जी, राघव, the entire team, support system, कोई भी जो सवाल था मेरा उसको लेकर, that was thanks to their research, and they've obviously been, you know, ideating this for almost 2.5 years. तो वो था, and वही जो एक body language का होता है जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, it's more about reading people. इस प्रोफेशन में, और आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग कि आज तक कस्टम ऑफिसर्स पे कभी फिल्म बनी नहीं है, एंड आई डोंट नो व्हाई. दिस इज वन लॉ एनफोर्समेंट बॉडी जिसको लेकर कभी कोई फिल्म, कोई शो नहीं बनाए. वी हैव मेड फिल्म्स ऑन पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी, BSF, and I've played pretty much everything, but this was fantastic, and I just felt ये इतनी नई दुनिया है. जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड जब जिस तरह तस्करी होती है, how smugglers get these things in, and also जब एक custom officer किसी को देखता है, it's not just about seeing someone suspicious in the red channel or green channel. इतना उनका भी काम लगता है उसमें. There's so much of research that goes from their team. So it's a well-oiled system, and just knowing the intricacies of that it's fabulous how they've actually coined so many different ways things are brought into cities in our country. हमने देखा है, पढ़ा है न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में, but nothing like you see in this show. I was in some places, I was like laughing in places like how are these things coming in, and it's so innovative and creative.
It's, yeah. Neeraj, would you like to answer? Like, you have worked with many different actors, stars, and so Imran was your first choice? Yeah, the only choice for this one. I mean, he was the one and only choice for this, and we would have only thought of looking beyond if there was no interest from his side, which was not the case. I think he was on board inside of 2-3 minutes of our meeting, and it was a fab journey. Yeah. Thank you. If you have a question, please raise your hand. They'll help you with the mic. Yes. Hi, Angelika here from the Trending Times. My question is to Sharad sir. Yes, ma'am. सर हीरो की आवाज बनने के बाद अब विलन बनना कैसा लग रहा है? नहीं, फॉर एन एक्टर ना एक बहुत ज़रूरी होता है कि वो अलग अलग किरदार निभाए। नहीं तो मैं भी बोर हो जाऊंगा, आप भी बोर हो जाएंगे मुझसे। तो इट्स ऑलवेज गुड टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स, और फॉर लास्ट 20 years आई हैव बीन ट्राइंग दैट ओनली, एंड बाय गॉड्स ग्रेस थोड़ा लकी हूँ कि मुझे मिलते रहते हैं ऐसे किरदार, और कोशिश करूँगा ऐसे ही, कभी इधर साइड, कभी उधर साइड, कभी ग्रीन चैनल, कभी रेड चैनल। सो कोशिश यही रहेगी। हाँ, उससे ये होता है कि फॉर एन एक्टर टू ग्रो, उसको अलग अलग किरदार करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपनी छवि या मैं ये हूँ और ऐसा ही करूँगा तो एज एन एक्टर ग्रो नहीं करेगा। वो शायद बड़ा स्टार बन जाए, बट वो एज एन एक्टर शायद बड़ा ना बन पाए। तो मैं एक्टर थोड़ा डिसेंट बनना चाहता हूँ, स्टार आप बना दोगे बाकी बात में। Sir, with a message for the audience. Pardon? As an antagonist of the show, what will be the message for the audience? इट्स एंटरटेनिंग शो। बहुत दिनों से मोना सारा सोना लेके डॉकयार्ड पे आ जाओ, ये लाइन सुनी नहीं थी किसी ने। तो वैसा ही शो है, एंटरटेनिंग है, कमर्शियल है, बिल्कुल अब ये ना समझें कि बहुत सा डार्क है। इट्स एंटरटेनिंग शो, फुल फन है, कमर्शियल है, फैमिली शो है, तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। शो है। वैसे एंजॉय कीजिए आप शो को। देखिए हमारी लाइफ में ना, बताओ, इतना स्ट्रेस हो, इतना होता है, ऐसे शो बनने चाहिए जहाँ आप एंजॉय करें। और जैसे इमरान ने कहा कि इस सब्जेक्ट पे कोई फिल्म नहीं बनी है, और शोज में भी एक या किसी फिल्म में छोटा पार्ट होता है, वो एक ये पूरा शो उसके ऊपर बेस्ड है। तो बहुत सारी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे क्या लिंक होते हैं, कैसे स्मगल होता है, या कैसे पकड़ते हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। I think to make a family show with Imran, I think that is quite a challenge. And we managed to pull that, and I think you guys are going to love it. Thank you. And I also control myself throughout the show. वेल, वक्त को मद्देनजर रखते हुए इंट्रोगेशन का वक्त अब खत्म हो चुका है। मेरी दरख्वास्त है आप सभी से, प्लीज थोड़ा आगे आ जाएं फॉर नाइस फोटो ऑप। इस लम्हे को कैप्चर करते हैं।